Class 7 Science. I am R.S. Prasad sir. Today your chapter 19, that is the soil. Question answer. Let us start. What will be in your chapter? तो ये चैप्टर है आपका 19 जो कि सॉइल से है। अब सॉइल को कलेक्ट कैसे करते हैं सैंपल के लिए, तो सॉइल सैंपल विद पिकेक्स के द्वारा हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये पिकेक्स आपको दिखा रखा है, ये हाथ में पिकेक्स लिया हुआ है। इससे क्या कर रहे हैं, ये सॉइल इसमें से कट मार रहे हैं वी शेप का। देखो तो वी शेप का 15 सेंटीमीटर डीप होल करके हम यहाँ से सॉइल को निकाल लेते हैं और टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। अब इसका जो कंपोजिशन होता है वो आपका सॉइल का बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ये वाटर को डिसॉल्व कर रखा हमने एक बीकर में रखा है। इसमें तो सबसे पहले जो ऊपर आता है, ये नंबर जो दिखाई दे रहा है, ये ह्यूमस होता है। बीच में यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाटर होता है। और इसके बाद नीचे जो है ये स्लिमी सॉइल होता है। और नीचे की तरफ आते हैं तो ये सैंड होता है। और सबसे नीचे जो होता है वो पेबल्स होते हैं, यानी सबसे बड़ा साइज जो है पेबल्स का ही होता है। आगे चलते हैं। ये आपका प्रोफाइल दे रखा है किसका, सॉइल का प्रोफाइल दिया हुआ। सबसे पहले A0 स्टेटा है, फिर A स्टेटा है, फिर B स्टेटा है और फिर C स्टेटा है। सबके साइज ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये कंपोनेंट ऑफ सॉइल को यहाँ शो कर रखा है। 25% एयर होता है, इसके बाद 25% वाटर होता है और 5% ये ह्यूमन यहाँ दिखाया हुआ है, ह्यूमस है। और 45% जो है मिनरल्स होते हैं इसमें। ये यहाँ पे प्लांट्स देखो दिखाई दे रखा है। ये क्या चीज है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक के वेदरिंग से ही बता रखा। तो ये प्लांट्स है, यहाँ देखो, यहाँ वेदरिंग ऑफ रॉक्स चल रहा है एंड ड्यू टू एयर एंड वाटर सॉइल यहाँ पे देखो सैंड में कन्वर्ट होनी चालू हो रही है। चलिए यहाँ देखिए क्या है, ये पोर्स दिखाए हुए हैं इसमें। ये पोर्स है, देखो ये पोर्स है आपका और ये भी पोर्स है। और सॉइल पार्टिकल्स है, ये यहाँ पे ये सॉइल पार्टिकल्स है, आप देख सकते हो सॉइल पार्टिकल्स है। ये एक्चुअली में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ लोमी सॉइल है। ये लोमी सॉइल का स्ट्रक्चर है गिवन। इसके बाद यहाँ ये सैंडी सॉइल यहाँ दिखा रखा है, ये लोमी सॉइल है और ये स्लिमी सॉइल है। इन सबको फिल्टर पेपर द्वारा हम फिल्टर कर रहे हैं हर एक को। तो ये वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, तो क्या हुआ, ये यहाँ पे देखो कॉटन लगा रखा, फनल है और ये मेजरिंग फ्लास्क है और यहाँ पे वाटर शो करके दिखा रहा है। तो सैंडी में बहुत ज्यादा वाटर पास हो जा रहा है, लोमी में क्या, लोमी में बहुत उससे कम होता है और सबसे कम जो है वो स्लिमी सॉइल्स में वाटर पास हो पा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं है, तो ये यहाँ पे शो करके दिखाया गया है। ये आपका कॉटन जो है, कॉटन सेक्ड है इनटू एल्केलाइन फिनोप्थलीन में। तो फिनोप्थलीन में जैसे ट्रक किया, इसके बाद दूसरा सिरा भी यहाँ पे जो डाल रखा था इन्होंने डैम्प करके सॉइल में यहाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं तुरंत। और ये क्या होता है, ये भी फिनोप्थलीन की हेल्प से ये भी ब्लू कलर का जाता है। तो ये बॉटल और ये सैंड है, तो ये क्या माइक्रो प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल में ये दिखाने के लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया। चलिए आगे देखो, ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स में से यहाँ पानी गिरा रहे हैं, ये पानी गिरता जा रहा है। आपको पानी गिरता है तो यहाँ से सॉइल भी आपकी यहाँ गिरनी चालू हो जाती है। ये सॉइल गिरती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी ऐसे कर रखा, सॉइल ले रखी है, सॉइल के लिए यहाँ पे पानी डाल रहे हैं तो ये सॉइल यहाँ पे गिरती जा रही है, यानी कि सॉइल हो गया ये। तो प्लांट्स स्टॉप सॉइल इरोजन, यानी कि इसमें कम गिरता है। जब प्लांट्स होते हैं तो ये सॉइल बहुत कम गिरती है, जबकि प्लांट नहीं होता है तो सॉइल बहुत ज्यादा गिरती है वाटर के उससे इफेक्ट से। चलते हैं थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो सॉइल इज आल्सो अ बेसिस ऑफ लाइफ एंड एज एयर एंड वाटर, जैसे एयर और वाटर है वैसे सॉइल भी हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। इफ यू डिग द अर्थ डीप यू विल फाइंड डिफरेंट लेयर्स, दिस इज द प्रोफाइल ऑफ सॉइल। वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज लीड्स टू ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू पाउडर डस्ट, which when mixed with decaying dead organic matter, humus form the soil. There are mainly 4 types of constituents of the soil: gravel, sand, silt, and clay. Loamy soil is a mixture of sand, clay, and humus. This soil is much useful for the growth of plants. There are pores in between the particles of the soil so that the soil becomes porous.
Wheat and grains are grown in clay and loamy soil, while cotton is best grown in sandy loamy soil. Soil testing refers to the analysis of a soil sample and gives information about the quality of soil and its fertility. Loss of upper fertile layer of the soil is called soil erosion. Along with the strong wind, flowing water, cutting forest, and excessive grazing and excessive plugging for agriculture also add to the soil erosion. Waste products waste and excessive use of the insecticides, fungicide, fertilizer may pollute the soil, and soil is a valuable natural resource. Now fill in the blanks. So first is the biggest particle. The biggest particle of the soil is pebble. You can write here pebble. Now second है यहाँ पे porous होगा. Porous soil has the maximum property of the water retaining. Next है आपका breaking up of the rocks into small particles is called that is the collapsing hem. Number 4, loss of upper fertile layer of the soil is called that is the erosion. Now fifth one, it is the sandy soil. Sandy soil is good for the growing cotton. Now write true and false for the statement given below and also correct the false statement. So you can see here, first one, the soil with humus is not fertile, so that is the true. Now loamy soil has gravel and clay particles in it, it is false. So all types of soil have the same property of the water retaining, false है. Soil must be porous for a good crop, true हो गया. और plants and trees increase soil erosion, it is false. तो false वाले statement को देखते हैं सही करके. तो यहाँ पे पहले वाला ट्रू था, सेकंड फॉल्स था, तो करेक्ट देना है लोमी सॉइल है सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स. थर्ड जो है फॉल्स है, तो करेक्शन है इसका, ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल डू नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टी ऑफ वाटर रिटेनिंग. फोर ट्रू है. फिफ्थ में क्या है, फॉल्स है. करेक्शन क्या है, प्लांट्स एंड ट्रीज स्टॉप सॉइल इरोजन. ये सैंपल ऑफ सॉइल लिया हुआ है, देखो यहाँ पे सैंपल ऑफ सॉइल, और इसमें जो है आपको ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये ह्यूमस है. वाटर कुछ ब्लू कलर का दिखा रखा, स्लिमी सॉइल जो है येलो कलर का है, सैंड जो है कुछ डॉटेड रेड से है, और पेबल आपका बड़े बड़े इसमें दिखाई दे रहे हैं. तो ये ABCD करके जो है क्या चीज है, ये सैंपल ऑफ सॉइल है. जो सॉइल अलग अलग रखे उनके सैंपल लेने के बाद इसको चेक करते हैं तब के. इसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है, राइट मेन कंपोनेंट ऑफ सॉइल. ये मैंने शुरू में बता दिया था. तो द मेन कंपोनेंट ऑफ द सॉइल आर एयर, मिनरल एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो ड्रॉ, नेक्स्ट है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉइल. तो ये सॉइल दिखा रखा है, यहाँ A0 लेयर है, यहाँ पे ये A लेयर है और B लेयर है और ये C लेयर, इसको स्ट्रेटा भी बोलते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सॉइल शोज ह्यूमस लेयर. So answer the topmost layer A0, which is also called the organic layer, also called humus layer. Now question next, how the porous layer is useful for the growth of plants. So you can write the answer. Porous layer is useful for the growth of plants in the following region. So plants take water and air from the soil. The roots of plants grow properly in the presence of porous soil. Number 3, bacteria present in the soil also becomes active in the presence of porous soil. Next question है, in which the measuring cylinder is the maximum amount of water collected. So you can write your answer. Maximum amount of water is collected in the measuring
cylinder containing sandy soil in the funnel. So next question, which type of soil absorbs more water? So you can write the answer, sandy soil absorbs more water. Third है, which type of soil is good for the growth of plant and why? Those silty soil or porous soil is a good for growth of plant because the pores of the soil are having the capacity to absorb the air and water, which is essential for the proper growth of plant, and the fertility of soil also increases. Which type of soil is not good for the growth of plant and why? So you can write the answer, sandy soil is not good for the growth of plants because this soil is not having capacity to hold the plant inside the soil. So next said the level of water increases in the well after 8 to 10 days after the rains. Why? So soil contains small pores due to rain. The water seeps inside the soil slowly and reaches inside the soil. I will take some time so the level of water increases in the well after 8 to 10 days. What do you mean by weathering of rocks? So you can write the answer. Due to physical, chemical, and the biological factors, mountain divides and forms small pieces, which further divides and the form soil. This process is also called soil formation. Next question, name the different component of the soil. So you can write the answer. The main component of the soil in soil are number one gravel and pebbles, number two B है sand, number three है clay. Next question, in which type of soil will most of the rainwater flows away? So polluted soil which does not contain pores not allow the rainwater to enter inside the soil. What will be the effect on the crops if there is no porosity in the soil? So you can write answer, if the soil has no pores, then air and water does not enter inside the soil in a proper amount. Thus, the crop production in the field is totally affected. Next question, what do you mean by soil erosion? So you can write the answer, the removal of topmost layer of soil through wind or water is known as soil erosion. Write three main reasons of the soil pollution. So you can write the answer, three main soil pollution are as follows. Number one, the addition of non-renewable sources into the soil. Second है by mixing the waste product into the soil, which close the pores of soil. Number third by using insecticides and pesticides in the field. Now next question, how will you conserve the nearby soil of your locality? So answer, the soil should be conserved by following. Number one है by plantation in the barren fields. Now second, by throwing the waste product properly. Now third, use more and more biofertilizer in the field. What is the effect of the tree cutting on the soil? So you can write the answer, plant are the good source of the soil conservation. The roots of the plant bind the soil properly. If trees are cut down, then the uppermost fertile layer of the soil removes with the help of water and wind. This is called the soil erosion, as well as the water level inside the soil decreases. Why is soil testing necessary? So you can write answer, why. By testing soil, we can know the quantity of minerals present in the soil. By this, we can also know the acidity or basicity of the soil, and by treating accordingly before sowing of seed. Now fill in the blanks. ये fill in the blanks पहले भर चुके हैं हम लोग.
The biggest particle of the soil is pebble. So you can write here pebble. Now second है, it is the porous. Porous soil has the maximum property of water retain. Third है, breaking up of rocks into small particles is called. It is erosion. It is collapsing है, COLLAPSING. Collapsing है ये. Now for loss of upper fertile layer of the soil is called, ये soil erosion है. So you can write erosion. Now fifth one है, it is the sandy soil. You can write here sandy. Sandy soil is a good for the growing cotton. Write true false for the statement given below and also correct the false statement. ये भी करा चुका हूं बच्चों, ये फिर भी देख लीजिए. First है, true soil with the humus is not fertile, so it is true. Second है, the loamy soil has gravel and the clay particles in it, so it is false. Correct क्या है आपका? Loamy soil has sand and clay particles. The third one, all type of soil have the same property of water retention. So you can write it is the false statement. Now correct the all type of soil do not have the same property of water retention. Fourth क्या है हमारे पास? Soil must be porous for a good crop. So it is true. Now fifth one, plant and tree increases soil erosion. So the answer is false. Correction क्या है? Plants and trees stop soil erosion. Write the answer of the following question. So first है, how will you prove that the soil contains microorganisms? So take two bottle, one contain wet soil and other bottle is having sand. Take two thread of 30 centimeters long whose both ends contain cotton dipped in basic clean solution, but both the threads are kept in the bottle as shown in figures. जैसे कि फिगर में दिखाई गई है. Now after some time we will observe that the cotton present in the bottle of soil becomes light in color, which shows that during the respiration carbon dioxide is released by the microorganisms which is absorbed by cotton and proves that the microorganisms are present in the soil. तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग. Now come to this one. How can you stop soil from the being polluted? So first है ये, soil pollution be checked by following ways. First one है by throwing the waste product properly. Second क्या है? Plantation are done in the ban area. Now third the by supplying biofertilizer to the plants. How will you test the capability of water retaining the red sandy soil, red loamy soil and black soil found in Chhattisgarh? So object हो गया इसका to detect the water holding capacity of soil. Apparatus क्या है? नंबर 3 funnel है, 3 measuring cylinder है and glass है, loamy soil है, sandy soil है and चिकनी मिट्टी, filter paper and cotton. ये सारी चीजें यहाँ पे शो कर रखा है. ये रेड सैंडी सॉइल है और ये रेड लॉमी सॉइल है और यहाँ पर ब्लैक सॉइल है, फिर फिल्टर पेपर है, कॉटन है, फनल है और मेजरिंग सिलेंडर है और लास्ट में वाटर है. ये कीप फिल्टर पेपर इन ईच फनल आफ्टर फोल्डिंग द keep a small amount of cotton in each funnel. Keep 50 gram red sand soil in the first funnel, 50 gram and 50 gram red loamy soil in second funnel and 50 gram black soil in third funnel. Keep each funnel on the measuring cylinder. So add 50 of water in each funnel, slowing after some time. When water filtration is over, then measures the quantity of the water in each cylinder, which proves that black soil is having the greatest water holding capacity.
and the sandy soil is having the lowest water holding capacity. Now last question है ये बच्चों, तो क्या what type of the happens, what will happen if the soil disappear from the earth, क्या होगा, सब कुछ मर जाएंगे. Soil is one of the most important natural resources on which the plants and animals survive. So if soil is vanished, then the plants also not present, and O2 is also vanished from the nature due to the absence of oxygen. The level of CO2 increases in a drastic manner. So the survival of organisms is not possible on earth or crop. So you can write next one, which type of soil is suitable for rice crop. So salty water increase the quantity of minerals by which the soil is not fit for corporation production, which is called as a soil pollution. इसी के साथ लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों. नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मेरा नया वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके. और कमेंट जरूर करेंगे क्या बना करके मुझे देना है और क्या कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ.